Assalamualaikum student, this is me your teacher Priya Suhail. Today I will tell you that how we are going to solve our activity 1.3. Okay, so let's start. So we are having an activity in which they are asking you to compare these two both approaches. Okay, approach 1 and second approach, and then check which one is better. Okay, in this program basically we are having to solve out we are going to take 3 numbers from the user. हमने 3 numbers लेने हैं user से, and then उनको compare करना है कि which one is larger. Okay, so we solve this algorithm with the two approaches. This is your first approach and this is your second approach, and now we are going to tell you that which approach is better, and you have to give the reason in written form. Okay, so let's start solving it. So first of all, what we are going to see when we compare these two algorithm. Number one, हम ये check करेंगे कि कौन सा algorithm जो है वो कम से कम steps ले रहा है इस problem को solve करने के लिए, क्योंकि जितने आपके कम स्टेप्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोग्राम की एल्गो की जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी. यू विल टेक लेसर टाइम, और जब टाइम का जो टाइमिंग रिस्पॉन्स है कंप्यूटर का, जब वो कम से कम होगा, वो कम से कम टाइम में आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन देगा, तो इट विल क्रिएट अ great impact on you. Okay, secondly we will see that which one of these two approaches contain less memory space. ये भी बहुत बड़ा आपने फैक्टर होता है. आपने देखना होता है कि आपका कोई भी एल्गोरिथम है वो कितनी मेमोरी लोकेशन जो है वो आपकी कंप्यूटर में कैप्चर कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वी विल सी वन बाय वन. Number one is that approach 2 is, यानी कि second approach is better than first approach. Why? Because this approach contain lesser steps as compared to the first approach. According to this approach contains only 4 steps. How? This I tell you. This is your first step. This is your second. This is your third. ये जो आउटपुट के टर्मिनल्स हैं, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, एंड दिस वन इज योर फोर्थ स्टेप, एंड योर प्रोग्राम गॉट फिनिश्ड. ओके, तो इस तरह हमने 1, 2, 3 and 4 स्टेप्स में ये प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दिया. नाउ कम्स टू द फर्स्ट अप्रोच. यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि हमने ये जो प्रोग्राम है कितने स्टेप्स में किया है. लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this program takes 7 steps in solving this problem. So my vote is go for second approach. ठीक है, second approach is better है क्योंकि इसमें हमें 4 steps में हम अपना काम कर रहे हैं और इसमें हमें 7 steps लग रहे हैं. Secondly, क्योंकि इसमें 4 स्टेप्स हैं तो यहाँ पर हमारी मेमोरी स्पेस जो है वो कम होगी और यहाँ पर हमारी मेमोरी स्पेस ज्यादा होगी. यहाँ पर इस फर्स्ट अप्रोच में प्रोग्राम के लिए हमें 7 मेमोरी लोकेशन चाहिए स्टोर करने के लिए रिजल्ट, और यहाँ पे हमें सिर्फ 4 चाहिए. सो after solving this, after examining these two approaches, we come to the solution that second approach is better than the first approach. Okay, so I hope you understand it, and if you understand it, then please don't forget subscribing and liking my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.